सो अगर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी ना, तो एक्चुअली व्हाट वी डू हियर, आई विल बी ट्राई टू मेक ना एक एप्लीकेशन बिल्ड करने की ट्राई करेंगे विद हेल्प टू विद जिया. So if you click on the application, this is a fully interface of the Zoho Creator. So there is a multiple options here कि जहाँ आपको बहुत सारी चीजें आपको दिखती है. You can use the organization settings, governance settings, metrics, operations and use. So but इसमें ना एक फीचर है, like it's a feature जहाँ पे आप जिया का यूज करके, जिया इज अ LLM मॉडल्स जो अभी रिसेंटली में भी बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है, because it's also connected with the NVIDIA. मतलब Zoho also collab with the NVIDIA company. So like there is a multiple options here. So you can try to be create from the scratch and the create या आपके पास DBM फाइल्स है. So like ना क्रिएटर में क्या है ना कि अगर आपके पास DBM फाइल्स है ना, वो भी आप अपलोड करके यहाँ पे अपना खुद का एप्लीकेशंस को यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि एक स्कीमास. सो स्कीमास इज लाइक कि वो स्ट्रक्चर या वो पूरा का पूरा डिफाइन स्टेटमेंट ना, जो उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें प्री एसेस हो सकते हैं आपके. सेकंड वन की आपके जो आपके डेटाबेस होते हैं वो हो सकते हैं, एंड उसमें कुछ फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हैं वो हो सकते हैं. इट्स लाइक एवरीथिंग, because creator, like inside the Zoho creator you can also do the Java implementations, Node.js implementations, and the widget part also. So everything inside there you can build. It is यहाँ पे 360 डिग्री का व्यू मिल जाता है आपको. यू कैन इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, लाइक कुछ भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो वी कैन ट्राई टू बी बिल्ड टू हेल्प विद द जिया. सो सपोज आई क्रिएटेड सम स्टफ, लाइक आपको अगर प्रॉम्प्ट देना है यहाँ पे, so you can try to be like suppose कि मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, we want a application which is help to medical industry and manage his stocks. सो बेसिकली क्या है कि हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है. सो वी कैन ट्राई टू बी सीइंग दिस थिंग कि ये जो छोटा सा प्रॉम्प्ट है ना, ये LLM मॉडल कैसे इसको लाइक इंश्योर करता है एंड इसको बिल्ड करता है. सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्टार्ट बिल्डिंग. सो ये क्या करेगा, ये पहले तो आपके प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा. ये विल बी एनालाइजिंग ऑल द थिंग इनसाइड देम. इसके अंदर अब ये पूरा का पूरा ना अपने आप के अंदर ये पूरा मॉडल क्या है, अपने आप को ट्रेन पहले से ही ट्रेन कर रखा है इसने. एंड ही कैन बिल्ड ऑल द थिंग्स लाइक कि आपका जो भी फॉर्म्स है इसके अंदर वो इसने बिल्ड कर दिया है, ऑर्डर स्टेटस इन्होंने बिल्ड कर दिया है. एक यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा इसने एक दूसरे से लुकअप फील्ड से भी ये अटैच हो रखे हैं. सो यू डोंट वांट बी कि ये इजीली पॉसिबल है यहाँ पे. सो इफ यू जस्ट चेक आउट दिस कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया है. मेडिकल स्टॉक मैनेजमेंट का इन्होंने फॉर्म बनाया है, एंड इसकी एक रिपोर्ट अलग से ही यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ऑर्डर मैनेजमेंट, स्टॉक अलर्ट सिस्टम्स रिपोर्ट. एंड इफ यू ऐड द सम कस्टम थिंग्स, लाइक इफ यू वांट कि स्टाफ मैनेज भी हो जाए, तो स्टाफ मैनेज प्रोसेस also include. So you can also give the prompt here. So it's not like कि ये चैट जीपीटी के API इसको यूज कर रहा है. इट्स इनसाइड देयर खुद के इन्होंने जिया का LLM है जो हेल्प करता है आपको बिल्ड करने का. इट्स नॉट लाइक कि आप कोई भी चैट जीपीटी के API इसको यूज कर रहे हैं. सो यू जस्ट ऐड सम थिंग्स. सो इनसाइड क्या हो रहा है कि फिर से एक जनरेट कर रहा है अपने आप को, एंड यहाँ पे डेटा एनालाइज कर रहा है जो भी आपने प्रॉम्प्ट डाला है. एंड ये उसी तरीके से सभी फॉर्म को इन्होंने यहाँ पे सेपरेटली आ चुका है. सो अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, जस्ट कि यहाँ पे हमारा फॉर्म्स, यूज केस और ये सारी चीजें बन चुकी हैं. एंड इफ यू क्लिक दैट जनरेट ऑप्शंस, सो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, and it will be analyzed and generating. This form is already created. I'm just clicking on the create application button. If
तो ये क्या कर रहा है, ये सारे डिजाइन्स को अब ये बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा है। ये अब हम क्या करते हैं, लाइक बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द लो कोड प्लेटफॉर्म, सो इट विल बी ऑटोमेट, मतलब वी आर डिसाइडेड टू व्हाट वी डू इनसाइड द बिजनेसेस। सो बट if you have any prompt or just a basic model आपको चाहिए, so you can build these things inside the creator. So ये ऑटोमेटिकली कुछ फ्रंट के अंदर आपको इंटरफेस है जो प्रोवाइड करा रहा है, देन इट्स, ये इन्होंने अभी कहा कि इट्स ऑलरेडी हैव बीन बी क्रिएटेड, सो यू जस्ट क्लिक ऑन द एक्सेस द एप्लीकेशन, सो इट विल बी क्रिएट योर एप्लीकेशन। सो आप यहाँ पे फ्रंट में इंटरफेस में एक बेटर यूआई के साथ यू सी दिस थिंग्स कि आपको ऑलरेडी सारी चीजें मिल चुकी है। यू जस्ट क्लिक ऑन द stock management and add the entries here. You suppose if you have any other entries, so you can add the entries. So stock name is just skin care uh, product, and then you have any other descriptions also there, so you can type this is help for uh, और मेडिकल न्यूज। सो इस तरीके से कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन डाल के, एंड यू कैन ट्राई टू बी लाइक अपने जो क्या है, आप अपने इसमें अपने इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, यू कैन जस्ट क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल वैल्यूज एंड वेंडर वैल्यूज, एंड यू कैन जस्ट सबमिट इट। So if you see this, this is the statement which is inside the medical stocks. So based on this medical stocks, you can also see कि यहाँ पे कुछ डेटाज मेंशन हो रहे हैं। आई थिंक ये सैंपल डेटाज है जो इस एलएलएम मॉडल्स ने हमें दिया है, बिकॉज एलएलएम जो लार्ज लर्निंग मॉडल्स होते हैं, ये आल्सो गोइंग टू बी ट्रेन पार्ट, कि इसने इसने वो पूरी परफेक्ट तरीके से नहीं दिया है। अगर मैं इसका अगर फ्लो देखूं, सो यहाँ पे कुछ फ्लोज या कुछ कोड होंगे, बट एक इनसाइड द सिस्टम देखो यहाँ पे कोई भी वर्कफ्लोज नहीं है। अगर अब मैं सभी चीजें देखूं, इट्स लाइक कि ना अभी ये इतना इतना मिच्योर नहीं है कि इन्होंने पूरा फ्लोज बना के दिया है, बट इट्स लाइक कि हाँ, अगर आप इसमें प्रॉम्प्ट में डालते हो ना कि ये भी चीजें कर सकते हैं, ये भी चीजें कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये कुछ फ्लोज देता, बट आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल या अचीव नहीं कर पाता। सो दैट्स व्हाई वी आर लाइक कि वी आर डेवलपर्स, जो हम लोग इस चीज को परफेक्टली मैनेज करते हैं। So there is also options. So inside there is also option, you can, अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगता है, and you can also like going to be portal schema builder. So inside the schema builder you can see these things कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, and if you want to be just एप्लीकेशन आईडी, इफ यू वांट टू बी जस्ट कि आपको ये जो पूरा क्रिएटर आपने बनाया है, एंड या आप या इस एलएलएम मॉडल ने बनाया है, यू कैन सेंड योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड आल्सो विद द बॉस। सो यू जस्ट सेव दिस थिंग्स इनसाइड योर लाइक योर सिस्टम, जस्ट क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट बटन। सो इस एक्सपोर्ट बटन से क्या होगा, यू कैन सी दिस .dbs फाइल। दिस इज बेसिकली एक डेटाबेस फाइल है, जो ये स्कीमा है इसका, जो इनसाइड जो आपके क्रिएटर के अंदर बना है, एंड यू कैन आल्सो अपलोड दिस स्कीमा फाइल टू एनीवेयर। सो आई आल्सो जस्ट टेल यू हाउ कैन यू डू दिस थिंग्स। सो जिससे कि अगर आपको किसी को सेंड भी करना है, you can just try to upload that stuff, and it's very easy. So just going to be a create application, import your files, and if you see this, अगर आपके पास ये db file है, just import this db file and this local storage. So here you can see this, अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा तो .ds files जो अभी हमारा डाउनलोड हुआ, this also is ds file. So you just click on the ds file, and if I just going to be a download thing, here is a ds file, just click on the ds and just click on this। एंड यहाँ पे क्या था, इसका लाइक एप्लीकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने ऑटोमेटिकली आपको मेंशन कर दिया कि the application is already exist, so you can't be do the same stuffs. So if I just clicking the save the script, so it not be going to be forward, so I'm just closing this stuff,
सो यहाँ पे आते हैं, यू कैन चेक आउट ऑल द थिंग्स। अच्छा, मैं इसमें 2-4 चीजें और कवर करना चाहता हूँ। यू कैन यू कैन ऑल्सो ट्राई सम like advanced options here. There is a Node.js option also. If you have a good knowledge about the Node.js, you can also try this Node.js like advanced development. So you can also try these things अगर आपको Node.js आती है, and there is a select namespace, because namespace का मतलब ये है कि अलग अलग variables या place पे आप इसको store कर रहे हैं। Then if you can just click on the create button, so जब भी फंक्शन लिखते हैं, because function is not like कि आप कोई भी एप्लीकेशन में डेटा या मतलब कोई फाइल नेम दे रहा है, इट्स लाइक कि आप एक फंक्शन नेम दे रहे हैं, तो यू कैन ट्राई टू बी कि आप जो भी नेम दे उसमें वाइट स्पेस ना हो एंड एनी स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट इंक्लूडिंग देयर। So just click on the create, and this function is basically associated with the Zoho Cloud function that is also a Zoho Catalyst. So it is a feature by Zoho Catalyst. So Catalyst is a serverless platform which is help you to कि आप अपने एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हो, चाहे ट्रेडिशनल मेथड में हो, ट्रेडिशनल मेथड में जैसे विदाउट लाइक आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो यू कैन यूज द Zoho Cloud function and enable it. So this is also associated with this Zoho Catalyst. So that's why it's called the Zoho powered by Zoho Catalyst. So just click on the creative button, and here you can see this like configure files and everything here. So अगर आपको Node.js आती है, so you can try these things, and like execution भी यहीं पे हो जाती है। You can just click on the execute button. There is a part. So like बड़ी से बड़ी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं inside the Node.js. You can also create PDF to image converter, invoice, OCR models, like everything. So यहाँ पे आप try कर सकते हैं। They have a multiple options also there. So like if suppose if you want to be connect any third party application inside your Zoho creator, right, and you can't be do with the deluge scripting, so you can use this advanced feature that's called the Node.js. So if you build like इस बारे में आई थिंक किसी ने भी बात नहीं करी होगी किसी भी जगह पे या नॉलेज बेस में भी। So you can also have Java code here. So if you have like if you know about some Java scripting language, because पेमेंट गेटवेज के अंदर हम देखते हैं कि like Java बहुत ही बड़े लेवल पे यूज होता है। So you can also build your own payment gateway, so own servers. So suppose if you just created the Java, and inside the Java you can execute this script. So आप चाहते हैं कि ये execute perfectly हो रहा है and बहुत बेहतरीन हो रहा है। So if you want to be कि अब इसी का REST API बना दिया जाए, तो you can just click on the solution button, and अगर आपने कोई पेमेंट गेटवे बनाया है या कोई ऐसा सर्वर बनाया है जो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट लाइक कि एक ऐसा डेटा सर्वर बना सकते हैं। सो हियर इज अ like microservices. So inside the microservices you can also build your own APIs. So like custom APIs, you just click on the add custom API. So it will be also like suppose I just use the Java, and the link name describe and the next, and method is a get method, or select the admin only and the alternative all users next. Okay, so actions and somebody, and you can also create your own custom APIs. So मेरे केस में मेडिकल स्टॉक मैनेजमेंट था, डिफॉल्ट में ये था, एंड मेडिकल स्टॉक मैनेजमेंट डिफॉल्ट। अभी यहाँ फंक्शन नहीं आ रहा बिकॉज आई जस्ट मेरे को एक बार फिर से रिफ्रेश डिफॉल्ट में, ठीक है। नो कस्टम एपीआई सपोर्ट ओनली द डिलीट फंक्शन। ओके, सो इसमें इन्होंने लाइक अगर मैं डिलीट फंक्शंस भी लिखता हूँ ना, सो इट आल्सो रिफ्लेक्ट देयर। सो डिलीट फंक्शन में ये पॉसिबल है। सो यू कैन आल्सो ट्राई दिस स्टफ जो आपको आपके एपीआईज या सर्वर्स का डेटा लेने के लिए भी बहुत परफेक्ट रहेगा। इफ यू वांट टू बी शेयर सम रिकॉर्ड्स लाइक जो क्रिएटर के रिकॉर्ड्स आपको किसी को भेजने हैं, तो बिकॉज बाय द एंड आपके यहाँ पे सारा ही रिकॉर्ड्स बन रहा है।
So you can also if you want to be send any application, any like suppose कि आप future में कोई application बनाते हैं, and you can just fetch your data inside the Zoho creator, and you don't want to be use the auth token or something like that. So you just try to be this REST API. So here is the things जो बहुत advanced चीजें हैं जो you can build inside the creator. And if you want to be build something inside, and like because as a developer we build application inside the traditional method, so आप Python का use कर सकते हैं, everything. It's a possible to do this here. But this is a platform which it is basically giving you like automation inside your businesses. But if you want, if you are a developer, so you can build everything inside the inside any things like based on the coding. So inside the Java, inside the in the Python, inside the Swift. So if you are a Apple developer, you can also connect with your application with any server, anywhere. So if you just interesting anything, so you can also try the Catalyst. So here, this is a very similar to to the Zoho with the AWS. But what is the difference between the AWS and the Catalyst is I just mentioned you. So Catalyst. So this is also a serverless platform which is basically help you to create your own application inside this inside is serverless platform. So there is a multiple things like Django also, Flask also, like Charify, Angular also. So many programming languages supported inside the Zoho Catalyst. So you can build also things. So it is the best part is it's automatically connect with your Zoho one bundle like applications. So you can also build these things. Also the AI ML features also there. So you can try to also these things like because यहाँ पे आपको बिल्कुल रॉ से बनाने की जरूरत नहीं है. You can don't be try to be create whole the systems. You just giving the like all the documents, all the database, and it will be automatically predict your based on your document. It will be automatically predict your uh, like any like वो predict कर देगा आपके जो आप चाहते हैं, जो requirements हैं आपके. So this is the backend part, DevOps part also there. So you can try to build these things. So ये तो advanced feature है जो आप basically यहाँ करते हैं. So like suppose like example a cancer detection server detection systems you can also build there. So I hope this is the features is basically help you to doing advanced things. So that is enough for today. If you want to be more about that stuff, we will continue these things. So thank you so much for joining this session. I hope it's helpful.